everyone and welcome. Today's stretching routine is going to focus on the techniques and stretches in order to learn the Alien Camel Pose. Dear viewers, आज के इस वीडियो में आप उष्ट्रासन के एक नए वेरिएशन की प्रैक्टिस करेंगे. You will begin this stretching routine with few shoulder rotations supported by a band or a stretcher. Do this 10 times. सबसे पहले आप अपने कंधों को स्ट्रेच करेंगे. इसके लिए किसी स्ट्रेचर या बेल्ट के सहारे अपने शोल्डर्स को अच्छी तरह घुमाएं. Now from the same posture, you are going to take a deep breath, extend your arms and bring them backwards. The focus will be to open up your chest and try to stretch your shoulders and upper back. अब आप अपने shoulders और upper back को अच्छी तरह stretch करेंगे. वीडियो में दिखाए हुए stretches को अच्छी तरह follow करें और गहरी सांस लेते रहें. In the next exercise, you will perform the active cobra stretch pulses. Perform it slowly, hold on for 2 seconds at least and try to stretch your lower back. अब आप वीडियो में दिखाए हुए तरीके से भुजंगासन परफॉर्म करेंगे. यह आराम से परफॉर्म करें और सांस अच्छी तरह लेते रहें. After this, you are going to perform the full cobra pose. भुजंगासन परफॉर्म करने के बाद आप पूर्ण भुजंगासन परफॉर्म करेंगे. अगर आप ये पोस्चर अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर दिए गए इस ट्यूटोरियल को अच्छी तरह फॉलो करें. In the next exercise, you will stand on the mat, extend your upper body and perform a proper back bend. Don't close your eyes, keep breathing gently in the bridge posture. पूर्ण भुजंगासन परफॉर्म करने के बाद आप चक्रासन परफॉर्म करेंगे. इसे आप मैट पर खड़े होकर एक बैकबेंड के तौर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं. अगर आप चक्रासन अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्यूटोरियल को अच्छी तरह फॉलो करें. In the next exercise, while getting into the wheel pose, you will push your butt downwards and try to get into a partial chair back bend. After this, you will relax for a few seconds and perform the child's pose in order to relieve your back. एक बात ध्यान में रखें कि बैक बेंड परफॉर्म करने के बाद एक फॉरवर्ड बेंड जरूर परफॉर्म करें. Now in the next stretch, you will put your hands near your knees, extend your arms and bend your back. Try to stay into this camel pose variation for 20 seconds. अगली एक्सरसाइज में आप वीडियो में दिखाया हुआ उष्ट्रासन का वेरिएशन परफॉर्म करेंगे. Now from the previous posture, you will grab your feet and get into the full pigeon pose. Stay in the posture and relax. इसके बाद आप कपोटासन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. अपने हाथों को पैरों के पास ले जाएं और इस पोस्चर में आराम से रुकने की कोशिश करें. Now it's time to perform our final posture, that is the Alien Camel Pose.
For this, first you will get into the basic camel posture and then switch to the pigeon pose. While performing the pigeon pose, keep your hands closer to your feet and maintain an appreciable gap between ground and your back. Now during this process, you will try to push your butt downward so that it forms the alien camel posture, similar to the chair backbend. उष्ट्रासना के इस वेरिएशन को सीखने के लिए सबसे पहले आप सिंपल कपोतासना परफॉर्म करें। अपने हाथों को अपने पैरों के पास रखें और इस प्रोसेस में अपने थाइस को नीचे की ओर पुश करें। Please note that you will feel an intense pain in your back while doing this if you're a beginner, so don't force yourself. Try to stay consistent and hold on as per your own flexibility level. इसके साथ साथ मेरे चैनल पर दिए हुए मेरे इंटरमीडिएट और एडवांस स्ट्रेचिंग रूटीन्स को भी फॉलो करते रहें। दी हुई बैक बेंड्स के बाद आप फॉरवर्ड फोल्ड्स और फॉरवर्ड बेंड्स को परफॉर्म करना ना भूलें। That's all for today. I hope you enjoyed this tutorial. Make sure to subscribe and share. See you in the next video and keep smiling.